working with ICMA, with US firms, US market as well as a lot of real world experience. So I think more than over a decade that he has been working in the data as such. Then we have Mr. Farooq Ali Naveed. Again, he is at FCMA. He is also very much experienced because he's part of academic boards of very renowned universities as well. So he's with us. I'll just keep it short. And then we have our Mr. Noman Rahim as well. He's leading the IT at Notebook. We have a wonderful team who have a great vision in front of them, and they really want this needs to penetrate at different levels, not only in the education sector, but also in the corporate sector. Over to you, Mr. Waqas. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. I think this am I audible? Okay. I'm hoping that you all are well today. Myself is Waqas. I'm a member of an international body as well, having a foreign experience of the US firm. I came back in Pakistan in 2019, and I started, giving training in data and data technology. So now I joined the Notebook as a COO of a business and data technology division. Okay. So the stage that we are, standing right now is a fourth industrial revolution. We already, lost all the three revolutions, but this is the time to, come into this revolution, and it is still immature. And now when we talk about the data is all around us. 90% of the data, today's data, what is generated in the last 2 years in the pandemic. Pandemic was cursing, but it was blessing for us in a sense that we digitized earlier than we were expecting. So once we have a data, then we talk about the data literacy. And the data literacy is an essential life skills. Why I'm saying it is essential? Because ये आपको empower करती है to talk about the data, to get the insight from the data. और ये आपको decide करती है आपके लिए वो tools जिसके through आप data से interact कर सकते हैं. अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि हमारे पास इस तरह की बहुत सारी examples हैं जिसमें data की utilization है. We will keep this session as much as interactive as we can. I have one single question. Do any one of us think that कि हम data से deal नहीं करते? Any of the department, any of the single person? I think we all are dealing with the data. We cannot avoid the data. If you single click, आप अपने credit card को swap करते हैं, आप email करते हैं, आप WhatsApp करते हैं, if you go over to the Twitter, all is the data. Data जो है हमारे पास is contained in different form. It's in a structured form as well as the unstructured form. Hello? Okay. We usually are very good in dealing with the structured data. But what about the unstructured data? How can we deal with it? For example, if we are getting images from the satellite, how can we get the insight from that data? For this, we need to learn the data literacy. अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएं तो you will see कि employer were asking about the computer literacy. Even though आपके पास आपकी core skills हुआ करती थी, whatever HR department से, engineering department से, और any other department, finance department से, जो भी, तो आप अपनी core studies के साथ जो आपके employer होते थे, they ask for the computer skills. Similarly, this जो era आज के दौर का है, क्योंकि मैं एक developed nation को देख के आया हूँ, और पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग नेशन, और डेवलपिंग नेशन में ज़्यादा काम हो सकता है, डेवलप नेशन में इतना काम नहीं हो सकता. तो डेवलपिंग नेशन में हमारे लिए भी डाटा की इंपॉर्टेंस वैसे ही है जैसे दूसरे मुल्क में. जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि 90% डाटा जो है वो हैज़ बीन क्रिएटेड एंड जनरेटेड इन द लास्ट 2 years, जो कि पैंडेमिक की वजह से डिजिटाइजेशन. डाटा लिटरेसी इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आप डाटा से डील करना सीख जाते हैं.
और मैं आपको एक बात बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। अगर हम डाटा के अंदर डाटा की लिटरेसी को लर्न नहीं करते तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि हम मार्केट में कभी भी कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो लोकल मार्केट हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो। इवन दो अगर आप लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं, if you go over to the LinkedIn and check out how many jobs are available related to the data, you will find the most job in the data field rather than other field. Okay, so data is an integral part of your domain. आप फाइनेंस में हैं, एचआर से हैं, whatever, data is an integral part. आप इसको avoid नहीं कर सकते. There is no way to avoid the data. For example, even a fruit seller is coming to your street, उनके माइंड में भी डाटा होता है कि मैं कहाँ पे कितनी सेल कर सकता हूँ. डाटा now is converted into a big data. Do anyone know what is the big data? Do anyone of you know big data? Big data क्या होता है? जब आप लोग देख रहे हैं कि एक एक क्लिक पे जो है वो चीजें डिजिटाइज हो रही हैं, इवन कि आप कोई भी मैसेज भेज रहे हैं वो भी आप डिजिटल फॉर्म में भेज रहे हैं, तो ये जो डिजिटल थिंग्स हैं ये एक्चुअली कंज्यूम करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं आपके डाटा को. नाउ सिर्फ डाटा होना इज नॉट इनफ. डाटा एक सक्सेस तो है. मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे आर्म फोर्स के लोग भी बैठे हुए हैं. आने वाले वक्तों में आपको जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू सेंड अ सोल्जर टू कॉन्कर द कंट्री. अगर आपके पास इनफ डाटा है, दैट्स फाइन. आप डाटा से ही कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा ही हो रहा है पूरी दुनिया में कि डाटा से ही कंट्रोल किया जा रहा है कंट्रीज को. हमारे आर्म फोर्स के लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे. तो डाटा लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जॉर्ज बर्सन ने भी ये कहा है अपने हार्वर्ड रिव्यू पोस्ट में भी कि ज्यादातर एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल हु हैव अ डाटा लिटरेसी. तो इस डाटा लिटरेसी को सीखना, समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको लर्न करना, स्पेशली हाउ टू डील विद अ बिग डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिस डिफरेंट फॉर्म्स को टैकल करना हमारे पास आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे भी इन दिस स्लाइड इज मेंशन दैट कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर्स की नीड नहीं है, बट द एम्प्लॉयज आल्सो अर्निंग अ लॉट फ्रॉम डाटा स्किल्स. यहाँ पे भी आप देखेंगे यूएस एम्प्लॉयज आर अर्निंग एंड मेकिंग एन $11,000 annually. Actually, they able to increase their salary by $11,000, and it is not a it's not a small amount. ये बहुत अच्छा अमाउंट होता है कि आप अपनी सैलरी में इतना इंक्रीज करें. हमारे पास जो मैंने पाकिस्तान आके नोट किया वो ये नोट किया है कि हम में से बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए जाते हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग. देखिए, वंस यू हैव अ सिस्टम, जब आपके पास सिस्टम होता है ना, तो आपको जरूरी नहीं है कि यू गो एंड डू सम जॉब फिजिकली. you this system is your whole world. You can connect with any of the country. Even though I am working with a US firm right now और हमारा काम हो रहा है सिंगापुर से, हमारे पास ऑफर है. रिसेंटली इंडिया ने हमें अप्रोच किया फॉर फॉर ऑल द सर्विसेज एंड सोल्यूशन. तो ये जो आपका सिस्टम है, दिस इज योर होल वर्ल्ड. अगर आपको, वैसे तो पाकिस्तान में देयर इज लॉट ऑफ जॉब अवेलेबल, इवन दो नोटबुक इज हायरिंग अ पीपल हु हैव अ डाटा स्किल. ठीक है, if you cannot find any job anywhere, you just come to the notebook and we will hire you if you have a required skill. So data skill is very important. Okay, अगर आप ये देखें, she is the data scientist प्रियंका जैन. इन्होंने भी एक बात करी है कि बिकॉज डाटा इज एवरीवेयर, तो डाटा इज कंसीडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेसेस, लैंग्वेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड उन्होंने ये बात बताई है कि हमें भी ये लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी अगर हम मार्केट में कॉम्पीट करना चाहते हैं, तो हम डाटा को समझना चाहते हैं. अब मैं आपको एक बात बता दूं, बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंगली आपके डाटा जो है वो चेंज होता है. तो हमारे पास कंप्लीट डाटा स्किल्स होनी चाहिए दैट वी कैन डील विद एनी काइंड ऑफ द डाटा. Data is coming in the form of the video as well, in the form of the voice as well. ये जो आपको मेरी आवाज आ रही है, if you can record this become a data. Once the thing becomes digitized, it become a data. तो हमें data की utilization आनी चाहिए. Let's move forward. Now, ये data literacy इतनी importance क्यों gain कर रही है? एक तो मैंने आप लोगों को in a very beginning मैंने आपको बताया था कि इसमें शार्प शॉर्टेज है मार्केट में. पीपल आर आस्किंग, इवन आप न्यूयॉर्क में जाएं तो न्यूयॉर्क में एनुअल शॉर्टेज जो है वो 25,000 प्रोफेशनल्स की है. और अगर उन्होंने उसको कूप नहीं किया तो इट विल पाइल अप, एक्चुअली इट विल गेट एग्रीगेटेड. सेकेंडली,
Organization. Secondly, organization has a piles of a data. उस डेटा से इनसाइड इंफॉर्मेशन कौन निकालेगा? हम निकालेंगे। उस डेटा से वैल्यू क्रिएट कौन करेगा? हम करेंगे। उस डेटा से पॉसिबल सेट ऑफ एक्शन कौन डिसाइड करेगा? हम करके बताएंगे विद द मैनेजमेंट। सो डेटा साइंस एंड द डेटा लिटरेसी आर कनेक्टेड। दैट्स व्हाई डेटा साइंस इज द डोमेन that deal with the data literacy। ये आपको बताता है कि आप डेटा लिटरेसी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, इश्यू आते हैं, वो एक डेटा साइंटिस्ट ही बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहा है। और डेटा साइंटिस्ट इज नॉट एन एलियन बाय द वे, ये हम सभी डेटा साइंटिस्ट हैं एंड वी आर डूइंग अ डेटा साइंस सिंस आवर चाइल्डहुड। आप लोग भी देखते होंगे कि व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग सम डिसीजन यू यूज सम कैलकुलेशन इन योर ब्रेन, ऐसे ही करते थे। नाउ द डाटा इज ग्रोन अप एंड नाउ इट्स कॉल्ड द बिग डाटा, तो ये हमारे ब्रेन में सॉल्व नहीं हो सकती ये तमाम चीजें। तो वी आर यूजिंग अ कंप्यूटेशनल पावर, हम अपने सिस्टम की पावर को यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है उसमें जीपीयू बेस्ड सिस्टम होते हैं और आपके पास सीपीयू बेस्ड में भी आपके पास हाई रैंक्स आ गई हैं जिसके थ्रू आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली टू गेटिंग दिस स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात भी है कि अगर आपकी कंपनी एक डेटा ड्रिवन कंपनी है तो मार्केट फोर्स जो है वो भी आपको रिवॉर्ड करती है, आपको रेट करती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड इफ यू गाइस आर नॉट अ डेटा ड्रिवन, और अगर आपकी कंपनीज डेटा ड्रिवन नहीं है, तो आप कॉम्पीट नहीं कर सकते मार्केट में, और ना जो मार्केट फोर्स है वो आपको आगे बढ़ने देगी। तो दैट्स व्हाई डेटा साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा लिटरेसी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप सी दिस स्लाइड, तो आप देखेंगे जो 3 टॉप जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि इकोनॉमिक फोरम भी इस बात पे डिस्कस करता है, वो भी डाटा से रिलेटेड। आप लोगों ने अपनी डोमेन चेंज नहीं करनी है, यू डू नॉट नीड टू चेंज योर डोमेन। आप जिस डोमेन में है उसी डोमेन के डाटा पे काम करना है। मुझे ये बताएं, अनदर क्वेश्चन फॉर यू, अगर आप अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएं या अगर आपके कोई एम्प्लॉयर हो, अगर आपको कंप्यूटर स्किल्स नहीं आती होगी तो आपको जॉब मिल जाएगी, वॉट एवर आप गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो, आप कुछ भी हो, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म एकेडमिक में किया हो, क्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। और वो कंपनी, वो एम्प्लॉयर जो सिस्टम को यूटिलाइज नहीं करते, क्या वो मार्केट में ग्रो कर जाएंगे? तो दिस इज फॉर बोथ, यानी कि आपकी जो मैनेजमेंट लीडरशिप है उनको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, एंड द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉइज उनको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा ये। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड एलॉन मस्क को तो आप सभी जानते होंगे, एलॉन मस्क इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी ये कहते हैं कि हमारी जो डिग्री है इट इज वैलिड फॉर 5 years इफ यू आर नॉट अकम्पनीड बाय विद द डाटा स्किल्स। अगर आप डाटा स्किल्स के साथ नहीं जाएंगे तो हमारी जो आज आप हमसे डिग्री लेते हैं वो भी 5 years के बाद वैलिड होगी और फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी डिग्री को वर्थ उसको वर्थ दें और उसको मार्केट में उसकी वैल्यू हो, तो आपको स्किल्स को भी कैरी करना पड़ेगा, और ये वो स्किल्स है जो आपने अपनी हर डिग्री के साथ कैरी। इवन एलॉन मस्क भी ये कहते हैं कि फ्यूचर में जॉब हासिल करने के लिए सिर्फ आपको यूनिवर्सिटीज कॉलेज की डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स को साथ दें। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप यूनिवर्सिटीज कॉलेज की डिग्री ना लें, एक्चुअली ये आपकी डिग्री को वेट देती है। ये स्किल्स आपकी डिग्रीज को क्या देती है? इट असाइन अ वेट टू योर डिग्री, ताकि आप मार्केट में अच्छी जगह पे डिप्लॉय किया जा सके। ओके, समथिंग वेरी अलार्मिंग, समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग। मैकेंजी, जो कि इट्स अ वेल नोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, they are saying this data literacy and this data technology will create a 13 billion, will inject 13 trillion in the world economy। 13 ट्रिलियन वर्ल्ड इकोनॉमी में होगा। तो आप मुझे बताएं, एज अ पाकिस्तानी, we don't have a right to take some share in it। इसमें 13 ट्रिलियन ये भी हम किसी को दे दें? हमने फर्स्ट रेवोल्यूशन दे दी जो कि स्टीम इंजन पे थी, जो सेकंड रेवोल्यूशन थी जो कि आपकी क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल वगैरह पे थी। वी कैन नॉट इवन मैन्युफैक्चर अ सिंगल कार राइट नाउ, वी आर असेंबलिंग। फिर जो द थर्ड रेवोल्यूशन वाज ऑन स्टिल इज इन आईटी। आईटी में आप देख लें, योर नेबर इज एक्सपोर्टिंग दैट मच एंड हाउ मच वी आर एक्सपोर्टिंग।
तो दिस रेवोल्यूशन इज स्टिल इमेच्योर. अगर हमने ये भी मिस कर दिया, देन वी अगेन कन्वर्टेड इनटू द कॉलोनीज. आपने देखा होगा 19th सेंचुरी में जापान एंड ब्रिटेन, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज कर लिया था अपने आप को, एंड दे कैप्चर्ड द वर्ल्ड. ऐसे ही हुआ था ना. तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को, इस रेवोल्यूशन को मिस नहीं करना चाहिए. अगेन फिर बहुत पीछे चले जाएंगे. अगर पीछे केपीएमजी, जो कि आप जानते हैं कि एक ऑडिट फर्म है, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनके न्यू हायर्स आ रहे हैं उनके पास भी डाटा. तो ग्लोबली वी आर सीइंग कि जितनी भी टॉप नॉच कंपनीज हैं, दे आर लुकिंग फॉर पीपल. उनका बैकग्राउंड कुछ भी होता है, वैसे आपका जो भी बैकग्राउंड हो, अगर आप डाटा ड्रिवन में ऐसे लोगों को करते हैं जो कि डाटा का बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी लेकर आते हैं, तो ये प्रोसेस ज्यादा एनरिच्ड हो जाता है. ठीक है, डाटा ड्रिवन प्रोसेस क्या हो जाता है, इट विल बी एनरिच्ड एक्चुअली. तो केपीएमजी भी ये बात करते हैं, फिर जर्नल ऑफ अकाउंटेंसी भी ये बात करते हैं. केपीएमजी ने अभी ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन करके इन प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, बिकॉज दे आर सीइंग दैट द फ्यूचर इज हियर. एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल द डाटा, देन यू आर एबल टू कंट्रोल द फ्यूचर एज वेल. अगर आप फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था ना, यू डू नॉट नीड टू सेंड अ सोल्जर टू कॉन्कर द वर्ल्ड. द टाइम इज देयर कि आपके पास डाटा है, यू कैन कंट्रोल. आप उस डाटा से ही कंट्रोल कर लेंगे. अच्छा, because I'm saying that you do not need to change your domain if you want to learn the data literacy, and you can find out here the banking sector, and you can see कि कहाँ पे data literacy and data science is apply हुई. Now the point is data literacy को how we can deal with the data literacy. We are running short of time, तो मैं इसको conclude करूंगा इधर. Data science is a one-stop shop. Again, data science is a one-stop shop to deal with the data problems. चाहे आपका डाटा किसी भी फॉर्म में हो, क्योंकि हम बहुत फॉर्म में काम करते हैं, डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. मैंने अभी आपको एक ऑडियो, वीडियो, वॉइसेस वगैरह की भी एग्जांपल दी, टेक्स्ट की एग्जांपल दी. वी कैन नॉट डील विद द टेक्स्ट. कैन वी डील विद द टेक्स्ट? नहीं कर सकते. यस, वी कैन इजीली डील विद द नंबर, बट once the text is coming into our database, हम कैसे काम करेंगे? Then the data science and the data scientist is one of the profession जो कि is a one-stop shop to deal with the data. So now you can see कि banking sector में हम काम कर सकते हैं. Move on please quickly. Marketing sector में काम हो रहा है. मैंने ये highlight किया. This slide will be provided to you by the management. Human resource, insurance, information technology. So there are actually data literacy and data science is applied on everywhere. So this is actually the roadmap that we start with the data, जहाँ पे हम programming language से start करते हैं. Now we are curious, programming language, हम तो finance से हैं, हम तो HR से हैं, हम तो IT के नहीं हैं. But मुझे एक बात बताएं, how can we communicate with the computer? So that's why we are using a language. But the language right now is a high level language. High level language का मतलब ये होता है which is very close to the human understanding. और जो programming language आजकल यूज हो रही है is very much similar to English. हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें ऐसा ही लग रहा होता है कि हम इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं. Is that so easy? ये वो बात नहीं रही जब आप लो लेवल लैंग्वेज पे काम करते थे, C++ एंड C# पे. ये बहुत आसान हो गया. तो प्रोग्रामिंग इज जस्ट टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम, क्योंकि ब्रेन में बिग डाटा सॉल्व नहीं हो सकता, उसका कोई रेजोल्यूशन अवेलेबल नहीं है. तो आपको सिस्टम को यूज करना पड़ेगा, और सिस्टम को यूज करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और उस कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना पड़ेगा. आई एम नॉट बिलोंग्स टू द कंप्यूटर साइंस बाय द वे. मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है. आई एम अ मेंबर ऑफ ICMA इंटरनेशनल, एंड ICMA एंड ICAP को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे. ठीक है, दिस इज अकाउंटिंग बॉडी. तो ये हमारा तमाम पाथवे होता है जिससे हम गुजर के. अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जब आप रियल वर्ल्ड में काम करेंगे तो डाटा वुड बी वेरी मैसिव. यानी कि डाटा को आप जब क्लीन करते हैं, दिस इज योर हाफ ऑफ द सक्सेस. क्योंकि डाटा इतने मैसी फॉर्म में आ रहा है कि उस पर आप पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते. तो उसको क्लीन करना पड़ता है, विच इज वेरी अंडररेटेड. लेकिन as a data scientist, 60 to 70% of our time spend on cleaning a data. तो ये तमाम एक रोड मैप बनाया हुआ है. We will discuss in detail inshallah in future.
So this is what the data science that can deal with the data literacy in the data. Please move on. And this is what we establish a business and data technology department in Notebook Private Limited, which is deal with the different kind of data technologies, include the data science, data analytics, data engineering, cloud, analytics with the Power BI and Tableau. So data technology, because this word is a plural, so it's saying that you can deal with the data in many ways. One of the top ways is the data science, but there are other ways is available to deal with the data. So this is all about the data and the data literacy. My final word is again, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल करें तो आपको डाटा लिटरेसी को समझना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा. इसके लिए इंशाल्लाह हमारे कीट्स के साथ भी प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको इनवाइट करेंगे. बस ये आप लोग कंसीडर कर लें. एंड जस्ट डोंट लिसन टू मी, गो ऑन टू द गूगल एंड सर्च आउट इट. Really, data is important. Data literacy is important for us. Thank you. Now we have a question and answer session, so you may ask. Sorry? As far as your company is concerned, Actually, this department is established for the purpose for providing a training, services, and solutions. So you plan to train our students, data science, Yes, we will, inshallah. We will, inshallah. Can you please explain a bit further of this roadmap? I mean, the Okay. Okay. All right. So that if you see this symbol, this symbol is referred to one of the programming language called the Python. Something very scary word, the Python. Python is a programming language, which is used for the, to deal with the data. Then we have some other libraries which are very efficient for the data analysis, for the pandas and the NumPy. Pandas stand for the Python for data analysis. Then we have some visualization libraries. Visualization is very important to to communicate the insight. And insight आपकी valuable जब ही होगी जब आप उससे अपने possible actions जो है वो set कर सके. तो ये हमारे पास visualization की library. ये जो GitHub आप देख रहे हैं ये एक्चुअली आपकी एक रिमोट क्लाउड रिपोजिटरी होती है जिसमें आपके सिस्टम में फोल्डर बने हुए होते हैं और अपनी फाइल्स को सेव कर रहे होते हैं. दिस इज द क्लाउड रिपोजिटरी जहाँ पे आप अपने वर्क को कर रहे होते हैं ताकि आपकी जो कम्युनिटी है, जो आपके पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके जो आपके कुलीग हैं या आपके पार्टनर हैं जो भी डाटा पे काम कर रहे हैं वो कनाडा में, तो हाउ कैन दे एक्सेस देयर योर डाटा जो आपने काम कर लिया, तो देन यू कैन यूज द डाटा. यहाँ पे हमारा एक समझे कि एक लैंडमार्क आता है जिसको हम कहते हैं डाटा एनालिस्ट स्पेशलिस्ट. अगर आप इस ट्रैक से गुजर के आ जाए तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि यू बिकम पाइथन डाटा एनालिस्ट स्पेशलिस्ट. लेकिन मार्केट में सिर्फ पाइथन ही काफी नहीं होती, आपको डेटाबेस में भी काम करना पड़ता है. तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है इट इज रेफरिंग टू द डेटाबेस. देन आपके पास स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आ जाती है जिससे आप अपने जो इवेंट्स अकर होने वाले हैं उनको आप गेज कर सकते हैं, उनके एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अकर कर सके. फिर प्रोबेबिलिटी के आपके पास, तो इस आप डेटाबेस से गुजर के आएंगे. फिर देन आपके पास एपीआई का कॉन्सेप्ट आता है. एपीआई का मतलब है कि किस तरीके से दो सिस्टम कम्युनिकेट कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में कैसे डाटा जो है वो कम्युनिकेट हो रहा है. देन यू कैन गेट. So the student hasn't got anything related to database and APIs, and he has gone through this track of yours, Bana, and everything. So how would you suppose the student would do the visualization without having a database? See, data is not coming from the database. So you have a CSV file, you have a PDF file, you have a different version of the data. So database is one of the ways that you are getting a data, but data is in another format. Right. So once you start with the pandas and all these things, it means that you are not using a database, but you are using other data sources. Exactly. Yes, sir. Please. Thank you very much for your time. Thank you. That you are accounting background of that. So nowadays, basically the board games are in the world of training and in the world of teaching. How you would connect the concept of gaming and the concept of board games
related to accounting and finance teaching for our students. See, if you, for example, you know that we just had provided a service to one of the chartered accountant firm called Fazal Mahmood Chartered Accountant Firm. They are, you know, dealing in oil and gas. All right. The auditor and the chartered accountant, they were doing some of the things called, you know, journal testing, test of control, test of design, and all this testing they do. And the one of the, you know, junior chartered accountant, you know, taking like 4 hours to, you know, do all this testing. We, as a data scientist, we went there. हमने उनके पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया. जितनी भी उनकी रिकंसिलिएशन है, देखें जो आपने सवाल पूछा कि किस तरीके से डाटा के साथ फाइनेंस का और इसका रिलेशन हो सकता है, वो रिलेशन, ये जो रिलेशन है ऑल डिपेंड ऑन द डाटा. आपके पास डाटा किस फॉर्म में है और आप करना क्या चाह रहे हैं. तो वो करते थे टेस्टिंग एंड जर्नल टेस्टिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग. हमने उनके काम को ऑटोमेट इन अ सेंस किया कि हमने उनके प्रोसेस को समझा कि डाटा आ किस तरह रहा है उनके पाइपलाइन में, वो प्रोसेस कैसे करते हैं उसको, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इस तमाम चीज़ों को हमने ऑटोमेट किया एंड सिंगल क्लिक पे लेकर. तो वो उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक जूनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट था एंड ही वाज टेकिंग लाइक 4 आवर्स टू कंप्लीट वन टेस्टिंग. ये तो मैं सिर्फ आपको एक टेस्टिंग की बात बता. देन उनके सुपरवाइजर जो उसको चेक करते थे, जिसमें 1 आवर 1.5 आवर और लगते थे, कि तमाम चीजें एक डाटा साइंटिस्ट ऑटोमेट कर सकता है. ये तो एक ऑटोमेशन का है जो आप रेगुलर काम कर रहे हैं. मिसाल के तौर पर आप बहुत सारे काम ऐसे करते होंगे जो बहुत रेगुलर बेसिस पे होता है, तो डाटा साइंटिस्ट को रेगुलर इसको ऑटोमेट ही करता है. एंड देन अगर कोई प्रिडिक्शन का काम हो या आपको प्रेजेंट को डिस्क्राइब करना हो, तो ये भी डाटा साइंटिस्ट का एक प्रोसेस होता है. और अगेन आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि आप उस डाटा से क्या इंसाइट लेना चाहते हैं या क्या प्रोसेस परफॉर्म करना है. तो जब भी डाटा आएगा तो फिर उसको देख के डी जाएगा. ठीक है. I think our time is up in 40 minutes, and I would just like to request Ms. Chala and Ram to come forward and explain briefly the house as to what all we can offer for our students in order to benefit from what is in the funds. Like to come up here and state. It's like to sit or stand over. I think so much longer everybody will get a bit of what Mr. Waqas, that kind of importance data, and how it can be verified at different levels as well. Now again, we have 2 streams that we are looking at right now. One is the certification stream that we can offer the so that means any student can have diagram they have, and they can actually when they want to go to the step to level 2, that will be up to them. But at least basic, everybody should know about data, how to utilize it, how to analyze it, how to handle it, how to manipulate it, so on and so forth. So I think that is something which is very important. So at certification level, and number 2 for computer science department, we have this called application center. So that means that whatever studies that they're doing, the PDC that they're in, practical components can be added on to that, to the theory of it, and then they could be actually taught to the students. So what will happen is that I think the greatest gap that we have between academia and industry linkage, I think so that will be post. Let me just speaking about it. Again, they will still be going to the industrial application of it, and that is what quote is, that is what our edge is, that is what our US is. Which is with young country. So we'll be working actually doing the with the insight, with their predictions and so on and so forth, and using data. So along with the degree stream, they can continue because that curriculum has already been designed, so we can't do much with it. What we can do is that we sort of like insert the data practical components. That will be the second. So 2 are open for students in whichever way possible, and they can of course get the greatest maximum benefit out of it, optimize their performance. All right. Basically, you're saying
that you are going to give a competitive advantage in the market to the KIET in the market set? Yes. Okay, one more thing, because you are good in academia and with the critical level of the information and the thing. What we provide, because we belong to the industry, we provide a complete skill. We start here with the laptop. We ask you to bring your laptop or we use some of the lab, and then we just straightforward start working on the data. So हमारा जो concept होगा वो ये concept होगा कि we won't go onto the power PPT or the slide deck something like that. We just start working on the data right away on our system. Okay. तो जो हमारी training होती है वो completely practical होती है industrial level पे कि जो international market में जिस तरीके से काम. With this, we have come to the end of the session. I would like to thank you all for sparing your precious time. And maybe we can take just one last question. If Sir Najib Jafri had joined us a little late, if there's any question from your side, sir, or from any of your staff, anyone. We are going to we intended to have this session for the faculty or the senior members first, and then we move on toward the students. We can have separate sessions with the students of the respective colleges and departments if it is recommended by the college directors. Because if this product has some value for our students, we would like to go ahead and capitalize on that particular aspect. So we're going to have separate sessions with the students. We can have separate sessions in the North and City campus. If you can have the outtakes of both the levels there. Sure. This one is the outline. Can you go up? See, this is the level 1, and we describe everything what would be the object. Yes, will be right. And also we have analyzed the curriculum of the PS3 that what practice action we can I would like to, on behalf of the college directors, thank the panel, the notebook team for being here.